हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमें आज क्या देखना है, एक्सरसाइज 1.c का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। ठीक है, 4 तक आपने होमवर्क किया है, आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप होमवर्क करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई द स्टेटमेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ठीक है, स्टेटमेंट को क्या करना है, दिस इज गिवन स्टेटमेंट एंड वी हैव टू verify the given statement. Okay, also name the properties of multiplication illustrated by this statement. Also write down the name of the given property. Okay, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है उसका भी क्या करना है, आपको नेम लिखना है यहाँ। चलो तो हम सीखेंगे यहाँ पे, पहले क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आप खुद वेरीफाई करके देखना है। मैं स्टेटमेंट नंबर 2 आपको वेरीफाई करके देता हूँ, 5 का सेकेंड। सो वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है। ठीक, चलो तो मुझे क्या करना है, कंसीडर एलएचएस करना है। एलएचएस क्यों, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास, तुमने यहाँ पे लिख लिया कंसीडर एलएचएस, कंसीडर एलएचएस। सो एलएचएस इज 8/7, 8/7 into 9/-10, 9/-10। ओके, माइनस का साइन आप ऊपर भी दे सकते हो, 8/7 into -9/10, right? Okay, so 8 and 10 both are divisible by 2, both are divisible by 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 4s are 8, 5s are 10. Okay, now 4 into 9, 4 9s are 36, but minus 36 upon 7 5s are 35, upon 7 5s are 35. Okay, so LHS का आंसर कितना है आ गया आपका, यहाँ पे लिख लीजिए आप 1। What is the LHS? 8/7 into 9/-10। यहाँ पे मैं क्या कर लेता, आपको समझने के लिए LHS भी लिख लेता है यहाँ पे। 8/7 into 9/-10 is nothing but -36 upon 35। ओके, नेक्स्ट आप आगे लिखना है, मेरे पास जगह है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, कंसीडर RHS, कंसीडर RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। So the right hand side of given statement is 9/-10 into 8/7 into 8/7। Okay, चलो तो कितना आएगा, -10 जो है माइनस साइन ऊपर दे दो, so -9/10 into 8/7, 2 4s are 2 5s are 4 9s are 36, 36 upon 35। Say this equation number 2nd, say this equation number 2 from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, answer of LHS is also -36/35 and answer of RHS is also -36/35. So both the answers are equal, that's why LHS and RHS both are equal to one another. So next step, from 1 and 2, from 1 and 2 we write, from 1 and 2 we write LHS is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. Now what is the left hand side? Which one is left hand side? 8/7 into 9/-10 is equal to 9/-10 into 8/7. So which property is this? This is a commutative property of multiplication. Right now, A into B is equal to B into A is nothing but the commutative property of multiplication. So यहाँ पे लिखना है हमें क्या, name the property of multiplication illustrated by this statement. Okay, therefore commutative property, commutative property, ठीक है, which property is used here, commutative property. तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन देखेंगे। 6 का मैं सेकेंड ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 5 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट, मैं सेकेंड ले रहा हूं यहाँ पे। -7/6 into -2/5, -2/5। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंडेक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3/8 is equal to -6 7/6 into -2/5 into 3/8, राइट। ओके, चलो तो इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है इसका। कंसीडर एलएचएस कर लो, कंसीडर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर एलएचएस। सो विच इज एलएचएस, -7/6
into minus 2 by 5 into 3 by 8. Right? Solve first bracket. 2 1 are 2, 3 are 6. Right? Minus 7 into minus 1. So I have plus 7. Plus 7 upon 15 into 3 by 8. 3 by 8. 3 1 are 3, 5 are 15. 3 1 are 3, 5 are 15. 7 into 1, 7. 8 5 are 40. Say this equation number 1. Say this equation number 1. Now consider RHS. Consider RHS. Right hand side. So the right hand side is minus 7 by 6 into minus 2 by 5 into 3 by 8. Right? Okay. So here minus 7 by 6 multiplied by 2 1 are 2, 4 are 8. So minus 1 into plus 3 minus 3. Minus 3 upon 5 4 are 20. 5 4 are 20. 3 1 are 3, 3 2 are 6. Minus 1 into minus 7, that is 7. 20 into 2, that is 40. Say this equation number second. Say this equation number second. From 1 and 2, यहाँ पे भी 7 by 40 है, वहाँ पे भी 7 by 40 है, right? So both LHS and RHS both are equal to one another. Both are equal to one another. So क्या लिखना है आपको? Therefore left hand side is equal to right hand side. And कौन सी प्रॉपर्टी? आप ठीक से देखोगे तो कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था मल्टीप्लिकेशन का. So that the property is associative property. कौन सी? Associative property. तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? From 1 and 2, from 1 and 2, we write LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. And so the left hand side is minus 7 by 6. Minus 7 by 6 multiplied by minus 2 by 5 multiplied by 3 by 8 is equal to minus 7 by 6 multiplied by minus 2 by 5 multiplied by 3 by 8. So which property is this? This is the associative property of multiplication. So write down here associative property of multiplication. Mention here also commutative property of multiplication. ठीक है? So इस टाइप आपको करना था. नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है. 7 का भी सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का भी सेकंड. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट, सिक्स का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट, वो आप होमवर्क करना है. माइनस 6 by 15 मल्टीप्लाइड बाय, देखते हैं यहाँ पे 7 by 8, देन प्लस minus 5 by 12 is equal to minus 6 by 15 multiplied by 7 by 8 plus minus 6 by 15 into minus 5 by 12. So this is the statement number 2 of question number 7. So इसका भी रिपीटेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले LHS कंसीडर करना पड़ेगा. So the consider LHS. So which is LHS? Left hand side, consider LHS. So LHS is minus 6 by 15 multiplied by 7 by 8 plus minus 5 by 12. Okay. Next, equal to minus 6 by 15 as it is multiplied by. Now the least common multiple LCM of 12 and 8. Both the denominators are different. Now make it same, right? So the LCM of both the 8 and 12 is 24. LCM of 8 and 12 is 24. So 24 करना है इसको डिनोमिनेटर को. So 7 by 8 multiplied by 3, right? 8 3s are 24. Therefore 7 3s are plus minus 5 by 12. 12 2s are, that's why minus 5 into 2 also.
So this is equal to minus 6 by 15 multiplied by 21 upon 24 plus minus 10 upon 24, right? Now minus 6 upon 15 multiplied by, both the denominator are equal, that's why common denominator 24. 21 plus minus 10, 21 minus 10, so answer becomes 11, right? 6 1 are 6, 4 are 24, 6 1 are 6, 6 4 are 24, minus 1 into 11, so answer becomes minus 11 upon 15 4 are 60, 15 4 are 60. Say this equation number 1. Say this equation number 1. So answer of the LHS side is minus 11 by 60. Minus 11 by 60. Now consider RHS. Consider right hand side and find the answer of right hand side. If both the answers are equal, then there is one specific property of multiplication, and so that property is known as a which property? That is the distributive property of multiplication over addition. Okay. Next one, consider RHS. Consider right hand side. So the right hand side is minus 6 by 15 multiplied by 7 by 8. Okay, minus 6 by 15 into 7 by 8 plus minus 6 by 15 into minus 5 by 12. Okay, so 3 1 the 3, 3 1 the 3, 2 the 6, 3 5 are 15, right? 2 1 the 2, 4 the. Is it clear? 3 2 the 6, 3 5 the 15, 2 1 the 2, 4 the 8. Then minus 1, this minus 1 into 7, answer become minus 7. Minus 7 upon 20. Minus 7 upon 20. Plus 6 1 the 6, 2 the 12. 5 1 the 5, 3 the 15. Right? Minus 1 into minus 1, plus 1. Plus 1 upon 3 to the 6. 3 to the 6. Okay, 3 to the 6. Now the LCM of both 6 and 20. Now LCM of 6 and 20 is equal to 60. 60 is the LCM of 6 and 20. Okay. Now the denominator is 60 now. So 20 multiplied by 3 plus 1 upon 6 multiplied by 10. That's why minus 7 is also multiplied by 3, and here 1 is also multiplied by 10. So minus 21 upon 60 plus 10 upon also 60. 10 upon also 60. Minus 21 plus 10 plus minus and greater number sign. Say this equation number 2. Say this equation number 2. Both the answers are equal. Both the answers are equal. That's why from 1 and 2, we write LHS is equal to RHS. Right now, LHS left hand side is equal to right hand side. And which is left hand side? We know the left hand side. Left hand side is this. Minus 6 upon 15 multiplied by 7 by 8 plus minus 5 by 12 is equal to minus 6 by 15 multiplied by 7 by 8 plus minus 6 by 15 multiplied by minus 5 by 12. Right? Okay. So this is the property, and this property is known as a property of distributive property of multiplication over addition. So the name of property is distributive property of multiplication over addition. Okay, so स्टार्ट आपको ये वाले क्वेश्चन करने थे 5, 6 एंड 7, राइट? एक क्वेश्चन बचा है उसमें से, वो आप खुद करके देखना है। आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
खुद सॉल्व करके देख लीजिए, आपको प्रॉपर्टी भी मालूम है और कैसे वेरिफिकेशन करना है, एक एक एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।